Hello, everyone, and welcome to the new session of Jumbles. So, I welcome you all to the next session of Jumbles. As we have completed a lot of lectures on regarding Jumbles, so I think most of you are aware about how we are solving Jumble. Those who are new to this session, just go and watch the previous videos. You'll get the idea of how we are dealing with Jumbles. Now, without wasting any further time, let's delve into the first Jumble of the day. As is our strategy or as is our method, I'll be reading all the statement first, and then you'll be getting some time to solve the parajumbles. Let's start. Statement A. The new FTP, the new FTP should incorporate a plan to identify and promote the key sectors like textile and apparel, agri products, engineering goods, hand and machine tools, etc. Instead of a few terms of export excellence with few products like handicrafts, hosiery, handloom, apparel, etc. The focus on industries of export excellence, IEE, industries of export excellence, IEE is needed. For expansion in foreign trade, the government must assess the demand for key products in the global market to ensure export volumes, values, scale, and intensity. The new foreign trade policy 2023 to 28 aims to make India a 5 trillion US dollar economy, requiring updates beyond the unchanged format since its introduction in 2004. Statement E, there is a need for policy rationalization to level the playing field for export oriented industrial sectors, which can offtake directly in the export market at large. So we have a five statement parajumble, and you have roughly 3 to 4 minutes to solve this, and your time starts now.
Okay, so your time is up. Let us solve this parajumble. स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ए, द न्यू एफटीपी, देखो मैंने एफटीपी को पहले ही बॉक्स बना कर रखा था. न्यू एफटीपी, एफटीपी क्या है? इट इज अ शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म किसका शॉर्ट फॉर्म है? इट इज नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. तो हमें पता चलता है कि एफटीपी जो है, मतलब ए स्टेटमेंट जो है वो डी के बाद ही आएगा. तो ए जो है वो डी के बाद ही आएगा. इट कैन बी कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑल्सो, मतलब डी के तुरंत बाद ये आ सकता है या फिर दो तीन सेंटेंसेस के बाद भी आ सकता है, बट जब भी आएगा वो डी के बाद ही आएगा. ठीक है ना? सो डी के बाद ही ए आएगा. ठीक है. दैट ऑल्सो मीन्स कि ए स्टेटमेंट जो है वो हमारा पहला स्टेटमेंट नहीं होगा. एलिमिनेट कर देंगे. स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? इंस्टेड ऑफ अ फ्यू टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस विद फ्यू प्रोडक्ट्स लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, होजियरी, हैंडलूम, अपैरल एक्सेट्रा, द फोकस ऑन इंडस्ट्रीज ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस IEE इज नीडेड. अब देखना, इंस्टेड ऑफ का यूज किया गया है. इट्स अ कंजंक्शन, सो कैन नॉट बी आर फर्स्ट स्टेटमेंट. हटा दो इसको भी. फॉर एक्सपेंशन इन फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना? फॉर एक्सपेंशन इन फॉरेन ट्रेड, फॉर से चालू हो रहा है, preposition है, can't be a first statement. Eliminate this, cannot be a first statement. Next, the new foreign trade policy 2023-2028 aims to make India a $5 trillion economy, requiring updates beyond the unchanged format since its introduction in 2004. Now, keep or observe this closely. We do not have anything conclusive to eliminate this statement. ठीक है ना? हमारे पास कुछ ऐसा कंक्लूसिव नहीं है जिसे हम एलिमिनेट करें कि ये हमारा पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता. ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? वी जस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क कि ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है जी. नाउ लेट्स सी स्टेटमेंट ई क्या कह रहा है? देयर इज अ नीड फॉर पॉलिसी रैशनलाइजेशन. अब देयर से चालू हो रहा है. क्या देयर से चालू होने वाला स्टेटमेंट हमारा पहला स्टेटमेंट होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है. ये आप सबको पता है. एलिमिनेट दिस, कांट बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट. तो क्या बन गया पहला स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट बन गया आपका डी. चलो, डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद आपका ए आएगा क्या? द न्यू एफटीपी शुड इनकॉर्पोरेट अ प्लान टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट की सेक्टर्स लाइक. नहीं. डी के बाद तुरंत ए नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है? ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इनकॉर्पोरेट अ प्लान टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट की सेक्टर्स. ठीक है ना? की सेक्टर्स जो है उस पर ध्यान देना. और उसके पहले इन्होंने कहा है बी स्टेटमेंट की, इंस्टेड ऑफ फ्यू टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, few with few products like blah blah blah, the focus on industries of export excellence is needed. अब एक्सपोर्ट एक्सेलेंस कैसे होगा? की सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद. इसलिए बी पहले आएगा, फिर ए आएगा आपका. मतलब ए बाद में भी आ सकता है, लेकिन डी के बाद आएगा आपका बी, आएगा बी. ठीक है. उसके बाद आएगा, अब देखना ये क्या कह रहा है. एफटीपी की सेक्टर्स अपैरल वगैरह का बात कर रहा है. उसके बाद आएगा ई, देयर इज अ नीड फॉर पॉलिसी रैशनलाइजेशन टू लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. की सेक्टर्स के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, डीबीई. उसके बाद आएगा फॉर एक्सपेंशन इन फॉरेन ट्रेड, सी. And then A statement is conclusive. A statement is conclusive in nature. तो आपका आएगा लास्ट में. तो correct sequence will be D B E C A. I repeat again. Correct sequence will be D B E C A. D B E C A. So let's look at the questions now. Which of the following will be the third sentence? क्या था? D B E C A. 1, 2, 3. Statement E will be your third statement. Correct answer will be option C. Question number 2. Last sentence कौन सा होगा? चल कौन सा होगा? D B E C A. So A statement will be your last sentence. Correct answer will be option D. Which of the following will be the first sentence? Okay. D B E C A. So first sentence होगा option D. Sorry, statement D. Correct answer will be option A. I hope सबके answers correct आ रहे हैं. जिनके नहीं आ रहे, just go through the parajumble again. Which of the following makes a pair of consecutive sentences? चलो, क्या था हमारा sequence? D, B, E,
सी ए था हमारा सीक्वेंस। कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या, एक के बाद एक आने वाले। तो डी बी का एक पेयर बन रहा है, बी ई का एक पेयर बनेगा, ई सी का एक पेयर बनेगा और सी ए का एक पेयर बनेगा। तो ई ए का बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। डीबी का बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। चलो, तो इट कैन बी आवर आंसर। बी डी है? नहीं है। बीई आफ्टर रीअरेंजमेंट बीई का भी पेयर बन रहा है। ओके, एंड सी ए का भी पेयर बन रहा है। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन में आई थिंक देर इज सम what I can say, it's a typo, that is, it's a typing mistake, I think. So जिन्होंने भी DB लिखा है वो करेक्ट है, BE भी होगा तो वो भी करेक्ट है। दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। There is some typing mistake from our side. I apologize for this mistake. तो इस क्वेश्चन को will declare null and void. Let's go on to the next question. Which of the following options depict the correct order? ठीक है, तो क्या था हमारा सीक्वेंस? डी बी ई सी ए was हमारा सीक्वेंस। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू हैव गॉट ऑल द क्वेश्चन राइट। फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान देना। ठीक है, हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराजंबल ऑफ द डे। And here it is again, a 5 statement parajumble is on your screen. I'll read all the statement once for you. The government of India is fully committed to the health and development of the tribal population as a national priority, taking into account their ethical values, traditions, socio-economic conditions, and tribal organizations. Statement B. This disease is commonly found among tribal communities. Statement C. Sickle cell disease is a serious health challenge in India's tribal population. It poses a significant threat to the future and existence of our indigenous populations, and it is imperative to prevent the spread of this disease in a timely manner. And statement E, sickle cell is a genetic disorder in which a person's red blood cells become distorted and take on a sickle-like shape. So here we have a 5 statement parajumble again. And for this parajumble, you will be getting roughly 3 to 4 minutes to solve this. And your time starts now.
Okay, so your time is up. Let us solve this parajambal now. The government of India is fully committed to the health and development of the tribal population. Okay, as a national priority, taking into account their ethical values, traditions, socio-economic conditions, and tribal organizations. सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि this is a statement which is giving us some kind of a conclusion. है ना, एक जजमेंट टाइप है, क्या कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बता रहा है. सो इट इज मोर और लेस लाइक अ कंक्लूजन टाइप ऑफ सेंटेंस. सो हमारा पहला स्टेटमेंट तो ये होगा नहीं. आई थिंक दिस विल बी आवर लास्ट स्टेटमेंट, बट लेट्स सॉल्व द एंटायर पैराग्राफ. दिस डिजीज, कौन सा डिजीज पता नहीं, कांट बी आवर फर्स्ट स्टेटमेंट. सिकल सेल डिजीज इज अ सीरियस हेल्थ चैलेंज इन इंडियाज ट्राइबल population. Now we do not have anything conclusive to eliminate this statement. So this can be our first statement. ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? We just put a question mark. Statement D क्या कह रहा है? It poses a significant threat to the future and existence of our indigenous populations, and it is imperative, मतलब बहुत जरूरी है, to prevent the spread of this disease in a timely manner. ठीक है, तो it आया है तो can't be our first statement, हटा दो इसको. स्टेटमेंट ई क्या कह रहा है? क्या कह रहा है स्टेटमेंट ई? सिकल सेल इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन्स रेड ब्लड सेल्स बिकम डिस्टॉर्टेड एंड टेक ऑन ए सिकल सेल लाइक सिकल लाइक शेप. ठीक है, अगेन वी डू नॉट हैव एनीथिंग कंक्लूसिव. हमारा ये पहला स्टेटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? वी जस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क. अब देखना, दो स्टेटमेंट आ गए, स्टेटमेंट सी भी और स्टेटमेंट ई भी. अब इसमें से कौन सा होगा देखते हैं. अब स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है? सिकल सेल इज अ सीरियस हेल्थ चैलेंज. सिकल सेल डिजीज इज अ सीरियस हेल्थ चैलेंज इन इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशन. और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि सिकल सेल होता क्या है, कि सिकल सेल इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ये स्टेटमेंट ई में किया. तो आइडिया क्या है सिकल सेल डिजीज की, उसको एक्सप्लेन किया. तो ये कौन सा टाइप हो गया? दिस इज मोर और लेस लाइक आइडिया एक्सप्लेनेशन, और वी कैन से दिस इज गोइंग फ्रॉम जेनेरिक टू स्पेसिफिक. यहां पर जेनेरिक बताया कि सेल सिकल सेल डिजीज होता क्या है, और उसका डेप्थ में स्पेसिफिक बताया कि इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो इन बोथ द कंडीशंस हमारा सी पहले आ रहा है, उसके बाद ही ई आ रहा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी सी, सेकंड स्टेटमेंट विल बी ई. अब क्या बता रहा है? सेल इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, उसके बाद आएगा दिस डिजीज इज कॉमनली फाउंड अमॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटीज. तो सीई बी. ए तो हमने बोला है कंक्लूसिव है, तो डी रह गया बीच में, आ गया लास्ट में ए. सीई बी डी ए. Correct sequence will be CEBDA. I hope everybody has understood how I have solved this. जिनका भी गलत हुआ होगा, just go and rectify this कि कहां पर गलती हो गई है. अगर आपको चाहिए तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो. ठीक है, now let's go and see the questions. Which of the following will be the third sentence? चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है. CEBDA was our sequence. So 1, 2, 3. B statement will be our third statement. Correct answer will be option D. चलो जी, next one. First sentence कौन सा होगा? लो जी, बहुत ही आसान है. CEBDA. Statement C will be your first statement. Answer correct will be option B. Let's move to the question number 8. Which of the following will be the third sentence? CEBDA. Third sentence कौन सा है? B for Bombay. Correct answer will be C for Chennai. Let's go and move to the ninth question of the day. Which of the following pairs make a pair of consecutive? चलो CEBDA. चलो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं. EA का बन रहा है क्या? EA का बन रहा है? नहीं बन रहा है. Can't be your answer. DC का बन रहा है क्या? DC का भी नहीं बन रहा है. चलो जी, AB का बन रहा है क्या? A और B यहाँ यहाँ नहीं बन रहा है, हटा दो इसको भी. EB का बन रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल बन रहा है. ये रहा आपका EB पेयर है. तो CA का बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन D. I hope you have got it right. Let's move on to the 10th question of the day. Which of the following option depicts the correct order of the sentences? चलो जी, CEBDA was our sequence. Correct sequence है यहाँ पर. Correct answer will be option E. Let's go to the next parajumble now. Okay, so this is the third parajumble of the day, and here it is on your screen. I'll just read it out once for you. Statement A क्या कह रहा है? Assistive technology can play a critical role in addressing these challenges by helping people with disabilities to perform everyday tasks and equally participate in their
communities. Statement B क्या कहता है? People with disabilities in India face many challenges, including limited access to education, employment, and healthcare. Assistive technology (AT) is any product or service that helps persons with disabilities, PWDs, or health conditions to perform daily activities to join the mainstream and improve their quality of life. Statement D. In addition, many people with disabilities struggle to access basic services such as transportation and housing due to a lack of accessibility. And statement E क्या कह रहा है? According to the first global report on assistive technology, great, more than 2.5 billion people in the world need one or more assistive products. So here we have again a five statement parajumble, and again you will be getting roughly 3 to 4 minutes to solve this, and your time starts now.
Okay, guys, so your time is up. Let us solve this jumble now. Statement A, क्या कह रहा है? Assistive technology can play a critical role in addressing these challenges. Which challenges? We have no idea as of now. Can't be our first statement, so eliminate this. Now, people with disabilities in India face many challenges, including limited access to education, employment, and healthcare. Sorry, people with disabilities in India face many challenges. So, can be our first statement. Seems to be a continuation of some other statement. Assistive technology AT, अब देखो फुल फॉर्म दिया हुआ है, उसका शॉर्ट फॉर्म भी बोला, इज एनी प्रोडक्ट और सर्विस दैट हेल्प्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज. ओके, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ है आपके असिस्टिव टेक्नोलॉजी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज का. ठीक है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज का. तो बी आपका पहला स्टेटमेंट नहीं होगा. और एक बार आपको ये क्या बोल सकते हैं, प्रूफ मिल गया आपको. ठीक है, सो बी नहीं होगा. देन सी में शायद हो सकता है, शायद नहीं. लेट्स पुट अ क्वेश्चन मार्क. देन वी हैव स्टेटमेंट बी. इन एडिशन, many people with disabilities struggle to access basic services such as transportation and housing due to a lack of accessibility. In addition, मतलब किसी addition के साथ. तो can't be your first statement, हटा दो. According to the first global report on assistive technology. तो assistive technology यहाँ पर introduce हुआ, correct? So can't be your first statement, हटा दो इसको भी. तो पहला statement क्या बचा? It is again nothing but C. उसके बाद आएगा आपका ई. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी. ठीक है ना, सी के बाद ई. उसके बाद आएगा बी. पीपल विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया फेस मेनी चैलेंजेस. ठीक है ना. उसके बाद आएगा डी. इन एडिशन मेनी पीपल विद डिसेबिलिटीज स्ट्रगल टू एक्सेस बेसिक सर्विसेज. ठीक है ना, मतलब मेनी चैलेंजेस है. उसके बाद चैलेंजेस के साथ बेसिक, मतलब एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज इज ऑल्सो बीइंग is also not given or is also not possible to the disabled people. So D and A statement can play a critical role in addressing. तो ये suggestive statement लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Statement A is more like a suggestive statement, or suggestive statements generally come at the last of the parajumble. So correct sequence will be C, E, B, D, A. है ना? Correct sequence will be C, E, B, D, A. Now let's look into the questions. Which of the following will be third sentence? क्या था? C, E, B, D, A. C, E, B, D, A. 1, 2, 3. B statement will be your third statement. Correct answer will be option C. C for Chennai. Question number 12. Last sentence कौन सा होगा भाई? क्या होगा? C, E, B, D, A. Last statement will be option A. Sorry, statement A. Correct answer will be option D. D for Delhi. 13th question of the day. First sentence. Wow. C, E, B, D, A. It's easy. Statement C will be your first statement. Correct answer will be option E. I hope you are getting it right. Let's go on to the 14th question of the day. Which of the following pairs make a pair of consecutive sentences? Chalo. C, E, B, D, A. कौन से पेयर बन रहे हैं? सीई का बन रहा है, ई बी का बन रहा है, बी डी का बन रहा है और डी ए का बन रहा है. ई ए का बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं. बी डी का बन रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल बन रहा है. सो बी डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. लेट्स गो. वी कैन चेक द रेस्ट ऑल्सो. सी और बी का बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है. बी और ए का बन रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं बन रहा है. सी डी का बन रहा है क्या? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है. तो वी हैव चेक्ड ऑल द स्टेटमेंट्स ऑल्सो एंड वी हैव कंक्लूडेड दैट option B will be the correct answer. Now, 15th question of the day. Correct order क्या है? चलो जी. C, E, B, D, A. ये हमारा correct sequence है. C, E, B, D, A. कहाँ पर है? A के option है, and that is C, E, B, D, A. Option E will be your correct answer. Let's move on to the next jumble. Now again we have a 5-statement para jumble over here. And I'll be reading all the statements for you as I am doing with each and every parajumble. If your diet lacks essential vitamins and minerals such as iron, vitamin B12, folate, and copper, you are at a higher risk. Sometimes, statement B, sometimes experiencing persistent feelings of lethargy and sluggishness and poor health could be an indication of an underlying health condition such as anemia. Statement C, anemia
Anemia is commonly caused by an imbalance of red blood cells, okay, ji, red blood cells in the body, often resulting from excessive blood loss, low production of RBCs, or autoimmune diseases. Statement D: consuming a diet rich in iron, vitamin B12, folate, and copper can help address anemia by replenishing the body's stores of RBCs and supporting healthy blood cell production. And statement E: leafy greens are an excellent source of essential vitamins and minerals that can help address anemia, including folate and iron. So, again, we have a five statement parajumble. And for this, you'll be getting roughly 3 to 4 minutes to solve this. And your time starts now. So, guys, your time is up. Let us solve this jumble now. If your diet lacks essential vitamins, statement A, क्या कह रहा है? If your diet lacks essential vitamins and minerals such as iron, vitamin B12, folate, and copper, you are at a higher risk. Higher risk of what? No idea. Atado can't be your first statement. Sometimes experiencing persistent feelings of lethargy and sluggishness and poor health could be an indication of an underlying health condition such as anemia. अब यहाँ पर anemia का introduction हुआ है. So can be our first statement, can't be our first statement. क्या करते हैं ऐसे समय में? We just put a question mark. Anemia is commonly caused by an imbalance of RBCs in the body, often resulting in from excessive blood loss, low production of RBCs or autoimmune diseases. Okay जी, ठीक है. तो कैनॉट, अब ये देखो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है
इंट्रोड्यूस हुआ है एनीमिया, और यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कांट बी आर फर्स्ट स्टेटमेंट, हटा दो इसको। उसके बाद कंज्यूमिंग अ डाइट रिच इन आयरन, विटामिन B12 वगैरह वगैरह जो भी है, एनीमिया को ठीक करता है। तो वो एनीमिया के इंट्रोडक्शन के बाद ही आएगा। कांट बी आर फर्स्ट स्टेटमेंट। लीफी ग्रीन्स भी वही करता है, तो कांट बी आर फर्स्ट स्टेटमेंट। तो बचता क्या है? बी ही बचता है। बी के बाद बी के बाद आएगा सी, क्योंकि बी में इंट्रोड्यूस किया एनीमिया को, सी में उसका एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद उसके बाद बताया गया है कि ये रिस्क हाई हाई क्यों होती है, मतलब ये डिजीज का रिस्क हाई क्यों होता है अगर आपके डाइट में विटामिन मिनरल्स नहीं हो तो BCA। उसके बाद दिया है कि क्या क्या खाना चाहिए, तो पहला आएगा डी, ठीक है, और उसके बाद आएगा ई, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट विल, करेक्ट सीक्वेंस विल बी BCADE। आई रिपीट अगेन, करेक्ट सीक्वेंस विल बी BCADE। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा? चलो, BCADE। थर्ड स्टेटमेंट विल बी स्टेटमेंट ए। Correct answer will be option B. Let's move on to the next question, question 17. First sentence कौन सा होगा? चलो जी, BCADE। First sentence will be B for Bombay. Correct answer will be A for Ahmedabad. Question number 18. Fourth sentence. चलो जी, BCADE. So 1, 2, 3, 4. Statement D will be your fourth statement. Correct answer will be option B for Bombay. 19th question of the day. Following pairs make a pair of consecutive. Okay जी, क्या था? BCADE। सो BC का एक पेयर बन रहा है, CA का एक पेयर बन रहा है, AD का बन रहा है, और DE का बन रहा है। EA का बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। AD का बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। So this can be our answer. Let's recheck the other options also. BC का हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है जी। Which of the following pairs make a pair of consecutives? BC का भी हो रहा है। ओके जी। देन BA का हो रहा है, BA का नहीं हो रहा है। CD का हो रहा है, CD का हो रहा है क्या? CD का नहीं हो रहा है। तो A, B और C में फिर से वो कुछ टाइप हो गया। कोई बात नहीं, दोनों में से जो भी आंसर आपने लगाया दोनों आर करेक्ट। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। डिपिक्ट्स करेक्ट ऑर्डर। क्या था? BCADE is our correct sequence. Correct answer will be option E. Okay, let's move on to the next parajumble. And this will be the last parajumble of the day. Again, we have a 5 statement parajumble. I'll read all the statement once for you. That is a massive national exercise, simultaneously arranging for teachers, textbooks, exams, and evaluations in many languages. That must see the government tie up with industry to make regional language literacy a draw for jobs, especially in tier 2 and beyond in content creation, retail, e-commerce, healthcare, agri-tech, microfinance, food processing, and hospitality. Okay. The UGC expects these students to continue their higher education in the same mediums. The CBSC allows schools to use 22 Indian languages as mediums of instruction alongside Hindi and English. And statement E, the next challenge is bigger to ensure that the graduates stand as much chance as their English counterparts in the job market. So we have a 5 statement parajumble, and you roughly get 3 to 4 minutes to solve this. And your time starts now.
The time is up, guys. Let us look at the all the sentences. Now, statement A. That is a massive national. That is which is no idea. Can't be our first statement. Just eliminate it. That must see the government tie up. अबे that आ गया फिर से can't be our first statement. हटा दो. The UGC expects these students. Which students? No idea. हटा दो. Can't be our first statement. The CBSE allows schools to use 22 Indian languages as mediums of instruction alongside Hindi and English. Now we do not have anything conclusive. कुछ भी conclusive नहीं है हमारे पास to eliminate this. So can be or cannot be our first statement. ऐसे situation में हम क्या करते हैं? We just put a question mark. यहाँ पर हम question mark डालते हैं कि ये हमारा पहला हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. Then we have statement E. The next challenge is bigger. Next challenge. पहला challenge तो पता होना चाहिए. तो दिस कैनॉट बी आवर फर्स्ट स्टेटमेंट. तो क्या बचता है हमारे पास? ए हट गया, बी हट गया, सी हट गया, ई हट गया, बचता हमारे पास डी फॉर दिल्ली. ओके. नाउ द सीबीएसई अलाउज स्कूल्स टू यूज 22 इंडियन लैंग्वेजेस. ठीक है. अब देखना द नेक्स्ट बिग चैलेंज इज बिगर. अब आप क्लोजली अगर देखोगे तो स्टेटमेंट ई में दिखा मतलब आप पढ़ सकते हो कि नेक्स्ट चैलेंज इज बिगर टू एंश्योर ग्रेजुएट स्टैंड एज मच चांस एज इंग्लिश काउंटर पार्ट्स. ठीक है ना. और उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? टाई अप करना चाहिए विद इंडस्ट्री टू मेक रीजनल लैंग्वेज लिटरेसी ड्रॉ फॉर जॉब्स. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमें ई और बी का पेयर मिल गया. ई और बी का पेयर मिल गया. ठीक है ना. ई में बोला है नेक्स्ट चैलेंज, और नेक्स्ट चैलेंज के लिए गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? रीजनल लैंग्वेज का वो चालू करना चाहिए. तो ई और बी का हमें पेयर मिल गया. ठीक है. चलो, तो डी हमें मिल गया. ई और बी मतलब जहां पर भी आएगा ई और बी साथ ही आएगा. ठीक है. डी के बाद, ठीक, डी के बाद आएगा आपका सी. यूजीसी एक्सपेक्ट्स दी स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर हायर एजुकेशन इन द सेम मीडियम्स. ठीक है. डी के बाद आएगा सी. अब क्या कह रहा है कि इन द सेम मीडियम मतलब अपने रीजनल लैंग्वेज के मीडियम में. नाउ दैट इज अ मैसिव नेशनल एक्सरसाइज. अब ये करना इट इज अ मैसिव नेशनल एक्सरसाइज, क्योंकि 22 लैंग्वेजेस है. 22 लैंग्वेजेस अलग अलग इसमें पढ़ेंगे और साइमल्टेनियसली वो करना है. तो दैट विल बी अ ह्यूज टास्क. तो डी के बाद सी, सी के बाद ए, और ई बी का हमने पैर बना के रखा हुआ है तो ई बी लास्ट में आएगा. सो करेक्ट सीक्वेंस विल बी डी सी ए ई बी. आई होप यू आर गेटिंग इट राइट. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. करेक्ट सीक्वेंसेस डी सी ए ई बी. कितने लोगों का सही आया है? जितने लोगों का सही आया देख लेना. जिनका नहीं आया, सॉरी, जिनका नहीं आया वो एक बार फिर से देख लेना कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुआ है एंड रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स.